हम हमेशा सोचते हैं कि अगर आटे में कुछ अलग मिलेट्स और सब्जियां डालें तो टेस्टी नहीं लगेगा, बिकॉज इट बिकम्स हेल्दी, है ना। और हेल्दी के साथ पता नहीं लोगों को ऐसे लगता है कि टेस्टी नहीं होगा। तो चलिए इस गलत फहमी को दूर करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जो हेल्दी भी है और साथ में बहुत स्वादिष्ट भी। Hello and welcome to the Shilpa channel, and this is the art of loving food. आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी सत्तू भाकरी with Thecha. Sattu is a great source of fiber and protein, whereas methi is a great antioxidant and is rich in the sources of vitamin K and B. वैसे तो ये भाकरी अपने आप में बहुत स्वादिष्ट है, पर इसे बेहतर बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे आज Nutralite DoodhShakti Probiotic Butter Spread. It's made of creamy milk, making it yummy and tasty. And the probiotics in it support your immunity. तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सत्तू आटा 1 cup. खपली आटा, it's also called emmer's wheat. Chili. Salt. 1/4 teaspoon haldi. Ajwain. There's something about the age-old way of Indian cooking. You have to crush the ajwain in between your palms. So I think the heat releases the flavor. So you mix it all in. Methi. पानी, just rest this atta for around 10 to 15 minutes. चलिए रोटियां बनाते हैं। धीमी आंच पे ऑलरेडी गरम कर दीजिए तवे को। देखो मेरे रोटी के शेप पे मुझे जज ना करे, इमोशन समझे। And it's ready. तो अगर आप नॉर्मल रोटी खाते खाते बोर हो गए हैं, you must definitely try this one. It tastes amazing. It's so nutritious. The kids are going to love it, and it's so easy. And adding the Nutralite DoodhShakti Probiotic Butter Spread is truly the butter way to do it. Thecha बनाना बहुत आसान है. It literally is a combination of 3 or 4 things, included salt. It's green chilies,
garlic, and you have to add peanuts, roast them all together and just pound it, and a little bit of salt. Yum. And do download the Simple Soulful app now. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. और हमेशा की तरह याद दिला रही हूँ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो.